We will start with some more, we will continue with the results related to derivatives. Yogesh Malla, please mute karo. So first we will see algebra of differentiable functions. It is very much similar to the algebra of limit of function, which we studied in unit 1. See, this was there. ये देखो, theorem 1, 2, 3 करके दिए थे मैंने. And some theorems we proved. See. This was about the function and limit of fx as x tends to p is L. ये था लिमिट के लिए, फिर वैसा ही कंटिन्यूटी के लिए था. Similarly, you have the algebra for differentiable functions. So that is now in unit 2. What we are studying right now is unit 2, so algebra of differentiable functions. Let us state the theorems today. I will not be proving it today itself. We will see only the statements, that is the results for algebra of differentiable functions and the composite function ka differentiation ka rule, jisko you must be remembering the chain rule you studied in 12th standard, and the inverse function differentiation ka result. So these results, the statements only we will see, and one or two examples based on these statements will be seen today. Okay, so please write down the statements, give the heading derivative some results, and the first result, first section of result is about algebra of differentiable functions. So I will give it as a theorem, and all 4 results. कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है डेरिवेटिव का, ऐड किया तो क्या होता है, मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, एंड व्हेन यू डिवाइड one function by the other function which is a non-zero function, you can say non-zero function ऐसा नहीं actually बोलते, लेकिन जो zero नहीं बनता है, when you are dividing by something you have to take care that it doesn't become zero at any point. So such function से when we divide उसका result क्या होता है, like that 4 results in this theorem would come. So write it as a theorem, no need of giving any number or something because the heading is there, algebra of differentiable functions. So I have 2 functions, f, and as you know we are defining on an open interval I. F is I to R, G is also from I to R, and both are differentiable. At the same point, at some point P in I. Then first result is about the multiplying by constant. So कहाँ से constant लेते हैं हम? Constant लेते हैं real numbers. So for C in R, CF is differentiable at P. And derivative कैसे निकालते हैं सबको पता है, CF नया फंक्शन है, उसका डैश यानी डेरिवेटिव at P. So the statement which I'm writing now gives you a kind of formula for a new function CF, उसका derivative कैसे निकालते हैं. So it is C into F dash P. तो F का derivative निकालो और उसको C से multiply करो. That's simple. I mean, you have used it so many times. When you differentiation करते हो तब यही rule use करते हैं. So this is for multiplying by a constant. Second is about adding 2 such functions. So add करके क्या मिलेगा, नया function मिलेगा f plus g. So f plus g is differentiable at P. It's differentiable at P, and इसका फॉर्मूला क्या है, f plus g का डेरिवेटिव at P, it's
derivative of f at p plus derivative of g at p. This is the formula. So derivative of f at p, notation क्या होता है? f dash p. So how do you read it? Read it. I mean, the one way of reading is f plus g dash at p is equal to f dash at p plus g dash at p. That is one way of reading. Another way of reading is that is derivative of sum of two differentiable functions at a point is sum of derivatives of the functions at that point. Okay. Agreed, no? Derivative of sum. यहाँ देखो sum का derivative. That is derivative of sum is sum of derivatives. जो लिखते हैं सम ऑफ डेरिवेटिव, लेने से सम ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पहले क्या निकाला है? डेरिवेटिव पहले निकाला है, फिर सम निकाला है. लेने से डेरिवेटिव ऑफ सम मतलब पहले सम फंक्शन निकाला है, देन डेरिवेटिव. ओके, सो दैट इज इन वर्ड्स. Shall I scroll down? We all written this? Yes, sir. So we will write the third one. FG. When I say FG, it is product is differentiable at P and FG bracket dash at P is equal to क्या है? ये अपना कौन सा U into V का फॉर्मूला मालूम है नहीं सबको? It is f dash at P into G of P plus f of P into G dash. This is the formula. I think you all have studied it as U into V cup. तो थोड़ा सा सिर्फ नोटेशन मैंने चेंज किया है. U into V का फॉर्मूला कैसा था? U into V का डेरिवेटिव क्या था? U into डेरिवेटिव ऑफ V plus V into डेरिवेटिव ऑफ V. It is the same formula, but थोड़ा नोटेशन डिफरेंट है, isn't it? इसको हम वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, इसको मैं दैट इज ये था, देखो तुम्हारा फॉर्मूला ऐसा था, ये अभी लिखा तो मैं यू विल रिकॉल इट. U dash into V plus U into V dash. Okay, or you also could write it as d by dx of U into V is du dx into V plus U into dv dx. This is how you studied in 12th standard. Now we are talking about derivative of a function at a point, इसलिए थोड़ा हमारा नोटेशन अलग है. ये नोटेशन याद आया ना सबको? फॉर्मूला वही है. तो अभी लास्ट वाला क्या है? डिवीजन के बारे में.
f by g is differentiable at p provided g of p is not equal to g. G of p comes in the denominator, ना इसलिए वो नहीं zero होना चाहिए. And the formula is like this: f by g dash at p is equal to, एक बड़ा सा डिवीजन लाइन दे दो और नीचे हमेशा आता है g of p brackets. So I'm writing g of p in the denominator, g of p brackets पर, इसलिए g of p cannot be zero. G of p cannot be zero. न्यूमरेटर पे क्या आता है f dash at p into gp minus f of p into here in the division formula the order is very important. ऊपर थर्ड में उल्टा लिखा तो भी चलेगा बिकॉज प्लस साइन इज देयर इन, लेकिन फोर्थ में ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, finished? Yes, ma'am. Now I'm not doing the proofs now because as I told earlier also, keeping the proofs aside, in limit algebra of limit also two theorems were proved properly in the similar line. See in the previous lectures I explained you that differentiability be a kind of limit. It is a kind of limit only. So whatever results we have proved for limit, similar results will be there for differentiation because derivative is also a kind of limit. But limit में limit of fx था, इधर limit of fx minus fp upon x minus p है. जो function है उसको थोड़ा सा modify करके फिर हम limit लेते हैं, and that limit is called as derivative. Okay, so if you have understood the proofs of the theorems which were there under the heading algebra of limit of a function, in the same manner the proofs of the theorem which I stated just now are there. But right now I'm keeping it aside and focusing only on the results and the problems part. Okay, so that examples can be solved first. Now let us go to the next theorem. It is about differentiation of composite functions. Differentiation of composite first of all let me ask you, you know what is a composite function? What is a composite function? Composite function. It is also known as chain rule. So function of a function is composite function. See, suppose, don't write this. I am writing sine of x. So which function I'm defining here? Sine of a real number. But if I write sine of x square or sine of e raised to x, or if I write e raised to x square, or if I write cos of x plus 3. Okay, so now understand this first one.
before we go to how to find derivative of a composite function, you should know what is a composite function. As I told you, it is function of function. मतलब पहला एक फंक्शन अप्लाई करेंगे और वो जो आंसर आएगा ना ऑन दैट यू अप्लाई अनदर फंक्शन. सो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन आई टेक एक्स से स्टार्ट किया, यू ऑलवेज स्टार्ट विथ अ रियल नंबर एक्स. पहला रूल क्या है, स्क्वायर करो. तो अंदर होता है वो पहला होता है. सो फर्स्ट रूल इज स्क्वायर इट. And next rule, why rule I'm saying? Rule means formula, means function. You must be remembering कि function मतलब एक तरह का फॉर्मूला ही रहता है, करेक्ट. एक तरह का कमांड रहता है, एक तरह का रूल रहता है. तो क्या करना है, पहले x का स्क्वायर करना है. तो ये एक फंक्शन हो गया. एंड जो आंसर आता है उसका हमें साइन लेना है, तो ये दूसरा फंक्शन. इसलिए इट इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन. सो इट इज कंपोजिट फंक्शन. ओके, यहाँ पे क्या किया, पहले e रेस टू x करो, देन यू टेक साइन ऑफ इट. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, हाउ डू आई रीड दिस, e रेस टू x स्क्वायर. तो यहाँ x से अगर स्टार्ट किया, सपोज आई स्टार्ट विथ x, इसको हम तोड़ते हैं. x से स्टार्ट किया तो पहले क्या करोगे आप, पहले एक्सपोनेंशियल लेंगे या पहले स्क्वायर लेंगे, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू आई रीड दिस फंक्शन e रेस टू x स्क्वायर. जो बाद में मैं पढ़ती हूँ ना वो मैं पहले करती हूँ. तो पहले यू टेक स्क्वायर, सो इट्स अ स्क्वायर फंक्शन, देन यू टेक एक्सपोनेंशियल, फिर ई रेस टू एक्स ले. तो ये क्या हो गया, ई रेस टू एक्स. सो स्क्वायरिंग, यहाँ से यहाँ जाते समय रूल क्या है, नंबर को स्क्वायर करो. और यहाँ से यहाँ जाते समय रूल क्या है, उसका एक्सपोनेंशियल. अंडरस्टूड. तो दोनों एक साथ में कर रहे, तो वो फंक्शन हो गया ई रेस टू एक्स. सिमिलरली हियर cos ऑफ x प्लस 3, इधर क्या किया है, पहले x से स्टार्ट किया, देन फर्स्ट फंक्शन इज x प्लस 3 एंड देन आई एम टेकिंग कोसाइन. सो दिस इज अ composite function. So just to make you understand what is a composite function, I am not defined, I am given you few examples. Finish writing. Don't write this orange wala. And now I will write the statement of changing. Now नीचे, I hope you finished. Theorem. Let I and J, sorry, J capital, sorry. If I and J be two open intervals in R, be open intervals in R. F जा रहा है I से J की तरफ, and G is a function from J to R. Are two functions. Then x naught is a number in R such that f of x naught is equal to y naught, which is in J. Okay. Please try to understand that earlier जब मैंने algebra, when I wrote algebra of differentiation, f and g are like two parallel functions. दोनों एक साथ होते हैं. So both were defined on the same real number p. But in composite theorem or composite function का derivative में
एक फंक्शन हम पहले अप्लाई करेंगे, जैसे एफ समझो पहले अप्लाई किया एंड देन जी अप्लाई किया, सो ये पैरेलल नहीं रहेंगे, दे विल अकर वन आफ्टर द अदर. Okay, so that is why I cannot say both are differentiable at P. नहीं, F का जो इमेज आएगा उसके ऊपर G differentiable रहेगा. That is why we need, see this x naught is in I, so F would be differentiable at x naught and G would be differentiable not at x naught, क्योंकि G आगे है ना, F होने के बाद G हो रहा है. F का जो इमेज है that is this f of x naught. At that point G would be differentiable. Okay, I will draw the diagram and explain. So F is if F is differentiable at x naught and G is differentiable at y naught, which is f of x naught, then the composite function, G O F, G of F ऐसे है. तो पहले कौन सा हुआ है, F पहले हुआ है, रिमेम्बर ना, जो अंदर रहता है वो पहले होता है. G O F जो कहां से कहां जाएगा, see here, F I से J की तरफ, G J से R, तो G O F कहां से कहां जाएगा, बताओ, you will tell me. I mean, what is the domain of GOF and what is the codomain of GOF? F took us from I to J and then G took us from J to R. तो GOF जब मैं एक साथ कंसिडर करती हूँ, यहाँ देखो मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया, ये देखो, यहाँ समझ लो ये I से J, ये J से R है, I से J, J से R. GOF, that means when you take the composite function, तो कहाँ से ये यहाँ GOF आएगा, x से सीधा गए हम e raised to x square. GOF कहाँ से कहाँ गए, ये कौन था I, ये कौन था R. I से R. Why nobody is answering? I से R. अरे अटेम्प्ट करो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, you will give wrong answer, उससे और क्या ज्यादा कुछ गुनाह होने वाला है क्या. If I'm asking question, don't you answer. So GOF is from I to R and is differentiable at which point, is differentiable, I में कौन सा पॉइंट है देखो ऊपर, x naught की y naught लिखो इधर, at, yeah, somebody unmute and tell me. It is differentiable at x naught or y naught, which point is in I, वहां पे ना रहेगा differentiable, its domain is I का कौन सा पॉइंट है, ये देखो I में x naught है, so it is differentiable at x naught and फॉर्मूला ऐसा है, GOF का डेरिवेटिव कहाँ आएगा, ऑब्वियसली x naught पे आएगा, इज इक्वल टू g dash of f of x naught into f dash of x naught, which can also be written as g dash at, what is f of x naught, यहाँ देखो f of x naught कौन है, f of x naught है मेरा y naught, I can write g dash at y naught into f dash at x naught. Okay, so this is the formula, you have used it in 12th standard, composite function का formula. पहले बाहर के फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का, फिर डेरिवेटिव ऑफ अंदर का फंक्शन, ये GOF है ना,
तो पहले g का डेरिवेटिव फिर f का डेरिवेटिव। ओके, ऑलराइट। तो अभी हम ऊपर जाके, एक्चुअली चेन रूल में ये फॉर्मूला यूज करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ मुझे बताओ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा। अच्छा नीचे लिखती हूँ, चलो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। हैव यू फिनिश्ड? आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू आस्क। फॉर्मूला लिखा सबने? So this is my main formula. तो लास्ट है, ये मेरा मेन फॉर्मूला है। ओके, चला प्रोसीड। अभी मुझे सिर्फ एक बताओ, एग्जाम्पल देके बताओ, साइन एक्स, जरा नीचे लिखूंगा by applying on sin of x square। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? डेरिवेटिव ऑफ, आई एम नॉट गिविंग एनी नोटेशन, एनी नेम, डेरिवेटिव ऑफ sin of x square माइनस, so g, या यहाँ पे क्या है, साइन है ना, x square इज अ फंक्शन f, साइन इज g फंक्शन। पहले g का डेरिवेटिव है x स्क्वायर लेना है, साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos of x square, and then you multiply by the derivative of inside। याद है ऐसे बोलते थे हम 12th स्टैंडर्ड में, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड। तो इनसाइड यानी पहले वाला फंक्शन, यानी फंक्शन जब होता है तब एक्स स्क्वायर पहले होता है, लेकिन डेरिवेटिव उसका बाद में लेते हैं। तो इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x। ओके, सो g कौन है इधर, साइन है, और f कौन है, एक्स स्क्वायर। सो दैट इज माय कंपोजिट फंक्शन का रूल। बट नॉट मेनी एग्जांपल्स वुड बी सॉल्व, एंड करेंगे हम सॉल्व, लेकिन we will not be substituting and all that, directly करना है, orally solve करना है, chain rule apply करना। Now the next is differentiation of inverse function। Differentiation of inverse functions। So what is the theorem here? Theorem, अब यहाँ 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। 1, I and J are open intervals। In R। 2, F is I to J is a bijective function। Bijective means 1 1 and onto, both 1 1 and onto function। Bijective function, you have studied in discrete maths। In x naught is in I such that f of x naught is equal to y naught। Fourth point is f is differentiable at x naught and डेरिवेटिव जो है x naught पे वो 0 नहीं है।
So when I am writing the derivative of f at x naught is not 0, that means ये denominator में जाने वाला है. Then the inverse function of f, then the inverse function of f given by f inverse I to j है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, j to I is differentiable at y naught and इसका फॉर्मूला क्या है, and किसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, f इनवर्स डेरिवेटिव. कहाँ पे आएगा ये, j में कौन है, j में y नॉट है, दिस विल बी एट y नॉट विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल, इनवर्स में रेसिप्रोकल लेते हैं, दैट इज द रूल. f का डेरिवेटिव निकालो, बट वो कहाँ पे आएगा, इट विल बी एट x नॉट, f will be having derivative at x naught. To find the derivative of f at x naught and take the reciprocal. That is the derivative of the inverse function. This is my result. Write it. I think I missed one diagram about. We will solve one problem on this and then we will stop. Finished copying the statement? Everybody? Yes, ma'am. So the rule is simple and then we can apply it on the problem. The derivative of function लेना है और उसका reciprocal लेना है. That's all you have to do. So example. एक example करते हैं हम. Find the derivative of the inverse function of the derivative of the inverse function of y is equal to x into e raised to x. तो यहाँ पे fx कौन है, fx कौन है, y is equal to fx where f of x है मेरा x into e raised to x. So u into v का पहले फॉर्मूला यूज करूंगी and therefore dy dx, that is f dash at x. Now here no x naught, no y naught, everything will be x only. F dash x would be, karo differentiation. You are going to use the first result, algebra of derivative of function, and the third part. देखो ये रूल हम यूज करते हैं. ओके, प्रोडक्ट वाला फॉर्म. सो कितना आएगा आंसर, f dash x आएगा. एंड एज आई टोल्ड यू कि कोई भी फंक्शन आप पहले ले सकते हो, इधर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना है मुझे. कैन यू डू इट एंड टेल मी orally? ऑल ऑफ यू ट्राई, बहुत इजी है. Yeah, what is the derivative? You can start with let's say first term into derivative of second plus second term into derivative of first. That's all. This all no? So that is e raised to x into x plus 1. ऐसा लिखो, कॉमन निकाल को, नहीं भी लिखो चलेगा. Okay.
Therefore, derivative of the inverse function of f is 1 upon f dash, na? That is 1 upon e raised to x into x plus 1. Okay. And you put x is not equal to minus 1. Put this condition here. We need, no? क्योंकि अगर x -1 हो गया तो मेरा डिनोमिनेटर 0 बन जाए. तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी इसलिए x need not be, x cannot be minus. This is how we take the derivative of a inverse. Okay. Now some more problems I will put in the Google form assignment. Now about, is it over? Please finish this off so that I will discuss some other things. Done. Now see, last time I had posted these notes. ये देखो, ये थ्योरम का प्रूफ मैंने भेजा था. ये पूरा प्रूफ भेजा था मैं. It's a very simple proof. So do you have any doubt in this? इस प्रूफ में कुछ डाउट है? सब समझ में आ रहा है? Have you copied it? I think I put it on GC, if I'm not wrong. तो GC पे डाला था. ये देखो, ये लिखा है मैंने, GC पे डाला था ये वाला. And I think 2 examples were also put on GC. ये भी GC पे डाला. And then there was one assignment. So most of you have solved. I think 14 लोगों ने solve किया है assignment. Do you want me to discuss that assignment? Then I will do it on Wednesday. Otherwise Wednesday को हम higher order derivatives देखेंगे. Very important topic. And especially if there is going to be MCQ type exam, this is going to be higher order derivatives is going to be very important. क्योंकि वहाँ पे ना डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके पूछने जैसे क्वेश्चंस में सेट कर सकते. अलजेब्रा में थ्योरम का प्रूफ किया, क्या एमसीक्यू पूछेंगे? कुछ नहीं आता है ना, तो वो उधर वो एमसीक्यू नहीं बना सकते. लेकिन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इम्प्लिसिट फंक्शन, देयर कैन बी मेनी एमसीक्यूज व्हिच कैन बी जनरेटेड. So if in case you have not solved the assignment, करो उसको, assignment को complete करो. Okay. So I'm stopping the record.